Number one. शुभम करोति कल्याणम आयुआरोग्य संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते दीपदेवी नमो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि दीपदेवी नमो नमः। ओम आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं सुरक्षतां पूर्वे दन्तारविन्दुद्धैर्लाभानदाञ्जनं कण्ठस्थिताय गरुडाय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। शुभं करोति कल्याणम् आयु आरोग्य संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपमहादेव्यै नमो नमः। ध्यायामि आवाहयामि दीपदेव्यै नमो नमः। अत संकल्पः श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। प्राणानायम्य ओम भूः
भुवः ओगं स्वः ॐ ॐ जनः ॐ तपः ओगं सत्यम् ॐ तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों तरेव लग्नं श्रीणं तरेव ताराबलं चन्द्रबलं तरेव विद्याबलं दैवबलं तरेव लक्ष्मीपते गौरीपते तेऽङ्घ्रियं सरामि शुभे शोभने मुहूर्ते आब्धवन्मनः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे सप्तमैवैव सत्वर्मन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम शरणे भूलोकान्तर्गत उत्तरमरिकाखण्डे कैनडादेशे एजाक्सगरे संकटमोचन श्री हनुमान मंदिरे शुभे दिन शोभने मुहूर्ते लोका समस्ताः क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय आयु आरोग्य ऐश्वर्याणां विद्यर्थं समस्तमङ्गलवाप्त्यर्थं समस्तदुरितोपशान्त्यर्थं चिन्तितमनोर्थवाप्त्यर्थं सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थं सर्वारिष्टशान्त्यर्थं श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत् समेत श्रीरामचन्द्रप्रीत्यर्थं श्री हनुमत्प्रीत्यर्थं श्री लक्ष्मीनारायण प्रीत्यर्थं उमामहेश्वर प्रीत्यर्थम् अद्य महागणपतिपूजनं वरनित्यादिदेवतापूजनं श्री आदित्यादि नवग्रहदेवता प्रार्थना श्री हनुमद्बिंब अभिषेक आराधन अहम करिष्येति संकल्प्य गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं श्रीमन्महागणाधिपते तये नमः ध्यायामि आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि पार्योः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि शरीरे स्नानं समर्पयामि पंचामृतमहास्नानं समर्पयामि उपरिशुद्धोदकमहास्नानं समर्पयामि ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्दनोभिः व्यशेम देवहितैयदायुः स्वस्ति न इन्द्रो विद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति 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 श्री महागणाधिपतये नमः गन्धान् धारयामि गन्धस्योपरि हरिद्रा कुमकुमं समर्पयामि उपरि अक्षतान् समर्पयामि अथ अर्चना ओम सुमुखाय नमः ओम एकदन्ताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम विजयगण्डकाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम विनायकाय नमः ओम धूम्रकेतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम भालचंद्राय नमः ओम गजाननाय नमः ओम वक्रतुंडाय नमः ओम हेरंभाय नमः ओम स्कंदपूर्वजाय नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि धूपदीपमहानैवेद्यम् त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मा नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवान्तारम् अवानुचानवशिष्यम् अपुरस्तात् अवोधरातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादितियोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं तिष्ठति सर्वं त्वं भूमिरापो नलो निलो नवः त्वं गुणत्रयातीतः त्वं स्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं इत्यात्मकः
त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं तं ब्रह्मा तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्वरं शान्ति शान्तिः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। ओम दुरद्राय विद्महे सर्वसिद्ध्यै धीमहि तन्नो दरा प्रचोदयात्। कवचस्वभगे विष्णोकण्ठे रुद्रसमाश्रित मूले तत्सरदो ब्रह्मा मध्ये मातगणास्पद कुशौ तु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो ते यजुर्वेदे सामवेदो धर्वणा अङ्गे शेषदै सा सर्वे कलसिन्धुसमाश्रिता आयान्ति पूजार्थं दुर्विक्षयकारक अङ्गे चौमनि चैव घोरावरि सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जले संसन्निधिं कुरु। इदं विष्णोर्विचक्रमे त्रेधा निदधे परं समूढवस्य पागं पूर्णादर्विपरापत सुपूर्णात् पुनरापतवस्तेव विकर्णावहै खमूर्जगो शतकृतो। ओम नमो मकरवाहाय पाशहस्ताय ते नमः। नमः प्रचेतसे तुभ्यं वरुणाय नमो नमः। वरुणाय नमः। ध्यायामि आवाहयामि पार्योहवाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि शरीरे स्नानं समर्पयामि पंचामृतमहास्नानं समर्पयामि उपरिशुद्धोरकमहास्नानं समर्पयामि। ओम यश्छन्दसां शुभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ओम शांति शांति शांतिः। गन्धान् धारयामि गन्धस्योपरि हरिद्रा कुङ्कुमं समर्पयामि उपरि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पैः सम्पूजयामि। ओम वं वरुणाय नमः। ओम व्रजेतसे नमः। ओम स्वरूपिणे नमः। ओम पाम्पतये नमः। ओम तीर्थराजाय नमः। ओम हेमभूषणाय नमः। ओम मकरवाहनाय नमः। ओम जलाधिपाय नमः। ओम पाशहस्ताय नमः। ओम ऋग्वेदाय नमः। ओम यजुर्वेदाय नमः। ओम सामवेदाय नमः। ओम अथर्वणवेदाय नमः। नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। धूप दीपमहानिवेद्यं ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरोतरस्य यद्वैषः पद्भ्यागं शूद्रो अजायत। धूपमाघ्रापयामि दिव्यमङ्गलदीपं चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत। दिव्यमङ्गलदीपं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि सर्वरक्षान् धारयामि। नाभ्यासीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोऽध्यो समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकागम कल्पयन् महानैवेद्यं समर्पयामि कर्पूरताम्बूलानि च समर्पयामि। अतनीलाञ्जनं श्रीवरुणाय नमो नमः। जाय प्रसह्य साहिने नमो वयं विश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः।
ॐ नमो मकरवाहाय पाशहस्ताय ते नमः नमः प्रचेतसे तुभ्यं वरुणाय नमो नमः ॐ लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत् समेत श्रीरामचन्द्राय नमः। ध्यायामि आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री हनुमते नमः। ध्यायामि आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि। ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु। आरत्यादि नवग्रहदेवताभ्यो नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। परक्षणं करोमीशं प्रसीद परमेश्वर। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत् समेत श्री रामचंद्राय नमः। हनुमते नमः। अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। सुत हनुमान की जय।
यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जायागिष्यपूरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि प्रपादस्यामृतं दिवि प्रपादोऽसौ पुरुषः पारोऽसि ततो विश्वं विक्रामत्। एवरीवन विल कम फॉर अभिषेक। सबको आ जाइए, एक लाइन में आ जाइए, कृपा करके कोट के साथ बताना और ओनली केवल हनुमान जी के चरणों पे एक चम्मच डालिए और साथ में प्लीज सबको आ जाइए। कृपा दुर्गा जय पुरनः पारो देहाधवात्मनः ततो विश्वं विक्रामत् सहस्रनामशने तस्माद् विराजजायत विराजो अधिपूरुषः प्रजातोऽत्यरिच्यता पश्चाभूषतो पुनः यः पुरुषेण हविषा देवायज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीराजं ग्रीष्मयुग्मशरद्धरिः सप्तास्यासन्दरयः कृतकृतमिरकृताः देवायज्ञन्तन्वानाः अवध्वन् पुरुषं पदं तय्यज्ञं वरुणीव्रौषन् पुरुषं जातमग्रत तेन देवा अयजन्त साध्यार्षयस्ते तस्मात् सर्वभूतः संवृतं वृषराजं पशुमिष्टानिष्टक्रे वायव्यान् आरण्यानाम्यास्ते तस्मात् सिद्ध्यात् सर्वभूतः वृषस्तामानि जज्ञिरे छन्नागन्धि जज्ञिरे तस्मात् केवल हनुमान जी के चरणों पे, केवल हनुमान जी के चरणों पे आधा चम्मच प्लीज। सबको बहुत काम बाकी है, बहुत सेवा बाकी है, सबको थोड़ा सा जल्दी करके स्नान करिए और आराम से बैठिए प्लीज। कृपा दुर्गोदय पुरुषः पादो देहाद्भवात् पुनः ततो विश्वं विक्रामत् साजनानशने अभि तस्मात् विराजजायत विराजो अधिपूरुषः स जातोऽत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमतोपरः यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीराजं ग्रीष्मयुग्मशरद्धरिः सप्तास्यासन्दर्जयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवायज्ञन्तन्वानाः अवध्वन् पुरुषं भजं तय्यज्ञं बर्हिषीतोक्षन् पुरुषं जातमग्रत तेन देवा अयजन्त साध्यार्षयस्ते तस्मात् विद्यात् सर्वभूतः संवृतं वृषराज्यं पशुमिष्टाविष्टक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्यास्ते तस्मात् विद्यात् सर्वभूतः वृषस्तामानि जज्ञिरे छन्दागन्धि जज्ञिरे तस्मात् यस्तस्मादजायत तस्मादस्वा अजायन्त ये केतो भयादत गावो हजज्ञिरे तस्मात् तस्माज्जात अजावयः यत्पुरुषं जगदुः प्रतिभाव्यकल्पयन् मुखं इमस्य को बाहु कावूरूपादावच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहूराजन्यकृतः ऊरूतरस्य यद्वैशः पद्भ्यागं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुसूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्याः नीरन्तरिक्षं शेषोजौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकागम् अकल्पयन् वेदाहमेकं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णे समतस्करस्तात् तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यपन्था विद्यते यनाय प्रजापतिं चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते
हम लोग वेद मंत्र पाठ करते हैं और आप लोग पाठ करते हैं। सुनिए भाई की कृपा का कुछ छेड़ वहीं पे रखते हैं, छेड़ पकड़ लेते ताकि आपको समझेगा और सबको जानते हैं। मैं जानता हूँ अलग लोग आते हैं, ये अलग पूजा करते हैं, सब आपके इतिहास पता नहीं होता। जब हम लोग वेद मंत्र करते हैं, वेद मंत्र आसान मत करो प्लीज, सुनिए सुनिए, बात मत करो प्लीज, ऐसा होना चाहिए प्लीज। वेदाहमेकं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यपन्था विद्यते यनाय प्रजापतिस्तरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य वीराः परिजानन्ति योनिं मरीचीनां परमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्यः आतपदे यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो ऋचाय ब्राह्मणे ऋचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनो व्याप्तो इष्टं मनीषाणः अवं मनीषाणः सर्वं मनीषाणः सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वनारायणं देवमक्षरं परमं परं विश्वतः परमानित्यं विश्वनारायणं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वोपजीवते पतिं विश्वस्यात्मेश्वरकं शाश्वतकं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायण ध्यानं नारायणः परः यस्य किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयते वा अन्तर्बहिस्ततः सर्वं व्याप्य नारायणस्य च अनन्तमव्ययन्तविगं समुद्रेतं विश्वसम्भुवं पद्मकोशप्रतीकाशकं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निश्चावितस्यान्तेनाभ्यां प्रतिष्ठति बालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगन्धराभिस्तलं भक्त्याकोशसन्निभं तस्यान्ते सुशिरकं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महालक्ष्मीर्विश्वाक्षीर्विशतो मुखः शोभभुग्गीर्वसन्तिष्ठनाहारमजगत्सवि दिव्यबोधपदश्चायी रश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापादनवदस्तदा तस्य मध्ये वह्निशिखा अणीयोर्ध्वागमस्तथा नीरतोयरमध्यस्था विद्युल्लेखेव भास्वना नीवारुसूकरस्तन्वी पीताभामाधस्यरूपमा तस्या आशिखाया मध्ये परमा आत्मा विवस्थित सब्रह्मस्य शिवस्य हरितेन्द्रसोऽक्षरपरमस्वरात् नितनं सत्यं परं ब्रह्मपुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विश्वः प्रचोदयात् विष्णोर्नुगं वीर्याणि प्रबोधय्य पार्थिवानि प्रमेरजागं धियो अस्तभायदुत्तरगं धनस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायो विष्णोरणाडमधिविष्णो कृष्णमधिविष्णोश्रत्रेणो विष्णोस्योरसि विष्णो ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः श्री हनुमते नमो नमः सकलाराधनैः सुवर्तितो हम सब श्री हनुमान चालीसा गाएंगे।
सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायको फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो यश गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहीं सकई कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाय राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई जल दिलांघि गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे।
सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान चोलावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त ना धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो यहाँ पढ़ै हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साकी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। कीजय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की। इतने लोग मंदिर में बैठे हैं और खम आवाज से जय बोलते हैं। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। अब मैं सुन सकता। जय जय बजरंग बली। जय जब घोषणा जय घोषणा करते ऊंची आवाज से करो। श्री हनुमते नमो नमः। अब हम बजरंग
बजरंग बाण गाएंगे। श्री हनुमते नमो नमः। हनुमान अष्टकम। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत रामचंद्राय नमो नमः। श्री हनुमते नमो नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बाल समर विभक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट पाहु सो जात न तारो। देवन आनी करी बिनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। तो नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपीस बसै गिरिजात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महा मुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। कै द्विज रूप लेवाय महा प्रभु सो तुम दास के शोक निवारो। वो नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गहे सिय खोज कपीस्य बैन उचारो। जीवत ना बच हो हम सोचो बिना सुधि लाय इहा पगुधारो। हेरी थके तट सिंधु सब तब लाय सिया सुधि प्राण उबारो। वो नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिय को सब राक्षसी सो कही शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु छय महारज निचर मारो। चाहत सिय अशोक सु आगे सुधे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। वो नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लग्यो उर लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मारो। लय ग्रह वैर्य सुषेण समेत तब गिरि द्रोण सुबीर उपारो। आन संजीवन हाथ दही तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। तो नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की फांस सब सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत
सब दल, मोह भयो यह संकट भारो। आनी खगेश तब हनुमान, जो बंधन काटी सो त्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जब अहि रावण, ले रघुनाथ पताल से धारो। देवी ही पूजी बलि विधि सो बलि, देव सब मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तब ही, अहि रावण सैन्य समेत संहारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। आज किए बड़ देवन के, तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो। पौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है तारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होय हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लालील से, अरु धरि लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आंचनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीशमक्षहन्तारं वंदे लंका भयंकरं। रामदूत कृपा सिंधो, मत्कार्यं साधय प्रभु। हम सब गाएंगे श्री राम जय राम जय जय राम, सब जानते हैं। चलिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। मैं गाऊंगा फर्स्ट, फिर आप लोग आएंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, सब कोई। भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सुमिरि पवन सुत पावन नामो, सुमिरि पवन सुत पावन हारो,
अपने बस करी राखे रामू, अपने बस करी राखे। श्री राम जय जय राम गाइए। श्री राम जय जय राम। 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 महावीर बिनवो हनुमाना, महावीर बिनवो हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना। श्री राम जय जय राम। 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 बोलो 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम गाइए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो सुनो हनुमाना कहई रीछपति, सुनो हनुमाना का चुप साधी रहे हो बलवाना। का चुप साधी रहे हो बलवाना। श्री राम जय जय राम। 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 पवन सो काजु कठिन जग माही, कवन सो काजु कठिन जग माही। जो नहीं तात होई तुम पाई, जो नहीं तात होई तुम पाई। श्री राम जय जय राम। 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 पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री
राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। पवन सुकाजु कठिन जग माही, कवन सुकाजु कठिन जग माही, जो नहीं तात होई तुम पाई, जो नहीं तात होई तुम पाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोल श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कनक बरन तन तेज बिराजा, कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। खड़े हो जाइए सबको। Everyone please stand. श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय।
नमः अनंत कोटि प्रेक्ष नमस्कारान् समर्पयामि। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आप प्रसाद चढ़ाएंगे। Only those who have prasad will go their prasad at this time, please. Please take your prasad. We come in a line, please. You offer prasad. जिसके पास प्रसाद नहीं बैठ जाइए, please. केवल प्रसाद और कृपा करके शांत होकर प्रसाद चढ़ाइए, प्लीज। श्री हनुमते नमो नमः। श्री हनुमते नमो नमः। आंजनेयाय नमो नमः। महाबलाय नमो नमः। जानकी शोक निवारणाय नमो नमः। वीरवीराय नमो नमः। आंजनेयाय नमो नमः। ऊपर जाइए। वंस अगेन कृपा करके शांत रहिए। जब पूजा होती है यहाँ पे बात करना मना है। मैं जानता हूँ आप लोग पहली बार आते हैं, तो ये हमारे नियम है, इसको पालन करो प्लीज़। बात न करिए प्लीज़, शांत रहिए। हम लोग पूजा के लिए आते हैं ना, बात करने के लिए नहीं आते ना। आरती के बाद हम सब खूब बात करेंगे। आरती के बाद 8:30 बजे के बाद खूब बात करेंगे। इस समय शांत रहिए प्लीज़। श्री हनुमते नमो नमः। रामदूताय नमो नमः। वंदे लंकाभयंकरं। श्री हनुमते नमो नमः। नेक्स्ट टाइम थाली में रखकर फिर हनुमान के लिए इसके साथ ऊपर जाना मना।
राम 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 सीता राम, जय राम 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 राजा राम। He Ram, 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 He Ram. जग में साचो तेरो नाम, जग में साचो तेरो नाम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम, तू ही तो है राधा का श्याम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम, तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे। इस जग के सारे काम, इस जग के सारे काम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू ही जगदाता विश्वविदाता, तू ही जगदाता विश्वविदाता। तू ही शुभ हो, तू ही शाम, तू ही शुभ हो, तू ही शाम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। जग में साचो तेरो नाम, जग में साचो तेरो नाम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। श्री रामचंद्राय नमो नमः, हनुमते नमो नमः। We have some guests from Scarborough. आप लोग कहीं मत जाना, पूजा के लिए आए हैं। 10 मिनट रामायण की कथा आरती होगी और फिर थोड़ा सा भोज सभी के लिए। तो जब सत्संग होता है तो बीच में खाना कर रहा लोग बात करेंगे। हमारे लोग जब खाना मिलते हैं तो शांत नहीं रह सकते। आप जानते हैं जहाँ हम लोग खाते हैं तो बात करते हैं। तो सत्संग के बाद हम खूब बात करेंगे, खाना करेंगे। तो इस समय अपना ध्यान हनुमान जी के चरणों पे रखिए, रामचंद्र जी के चरणों पे रखिए। I have to speak in English because not very many people speak. We have devotees who speak Tamil from the West Indies. People speak Malayalam, different languages. So we have to speak in such a way so that everybody understands.
Shri Ram Dut Kripa Sindho Mat Karyam Sadhaya Prabhu. So Bhakta Jano, last week we concluded our discussion from Kishkindha Khan, where Tara ji came and she saw her dear husband lying on the ground, Bali, the arrogant Bali. He had to be put to an end by Sri Ram because of his arrogance. And I told you of the 6 atatai. Let me just repeat it quickly. Anyone who performs one of these unethical actions or one of these heinous crimes should receive the capital punishment. ये तो शास्त्र की बात है. अग्निद गरदश्च शस्त्रपाणि धनापः क्षेत्रदारपहर्ता च षडेते ह्याततायिनी. So these are the 6 heinous crimes. Agnida, one who commits arson, who burns other people's property. According to Shastra, such an individual, if the individual is found guilty, should be given the capital punishment. Garada, one who poisons food. Remember in the old days, the Raja, before he has his Priti Bhoj, he will have people to taste the food for us. Someone to taste the food so that the Raja does not eat the poison food. So one who poisons food should receive, if the person is found guilty, should receive capital punishment. Shastrapani, attacking another person with weapons. And I'll take this a little further. For people who say that, Panditji, I don't have to slaughter the animal to get the meat, I can buy it at the store. जो लोग मांस खाते हैं ना, मांसाहारी लोग. So I'm going to tell you, if you want to eat meat, take the weapon. Don't take gun and go. Go with your hand and see who becomes the prey, who becomes the predator, who will become the dinner first. So you should not attack any person or any beings with weapons. Shastrapani, dhanapaha, taking another person's wealth, stealing another person's wealth. And kshetra dara apahartacha, one should not steal another person's land. And we know that you heard it many times. When the parents are alive, when the parents pass away, if they have a few acres of land, brother and brother would prepare to kill each other. Itna zameen. 2 pieces, 2 feet or 4 feet of land, they prepare to kill their brother or sister for it. And the other one is kshetradara apahartacha, and also one who takes another person's wife. Such a person should be given capital punishment. So Bali was guilty of number 3. Number 3 is Shastrapani, attacked his brother Sugriva with his weapon in his hands. The other one, the 4th one was Dhanapaha. He took all the wealth from Kishkindha and he exiled his brother Sugriva. The 5th and 6th rather, he took their land and also he took Taraji as one of his queens. So he performs 4 of these 6 heinous crimes. That's why he had to get capital punishment. Vinashaya dushkritam, Bhagavad Gita chapter 4 verse 8. Bhagwan comes to take care of all the Rakshas, like Kumbhakaran. Bali was one of them as well. So that's why Bali had to be killed by Prabhu Sri Ram because of his unethical actions. So Taraji heard the death of her husband and she came with disabled hair, prostrated to Sri Ram's feet. Prabhu, aapne kya kiya? Why did you take the life of my husband? And any wife would respond in such a way. You know, the strange thing is, it doesn't matter how the gentleman is bad. The wife, pativrata dharma ko palan karti hai. She'd always pick up for her husband. I'm in a situation where I see people who perform unethical actions, really bad husbands. We got both ways, bad husband and wife too. And especially when the husband passes away, because there's so much grief in the wife. And then, you know, people would ask, why? This person was not a good person. Then she would answer and say, he was my husband. 7 pheri hum log kiya. We walk around the fire 7 times. We took a vow to be pati and patni. So it doesn't matter how bad he was. I still love him. So she came before Prabhu Sri Ram with disabled hair and she lamented.
Tulsidas writes in this chaupai, and this is a very famous chaupai. After Doha number 10, chaupai number 1 of Kishkita Khan. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Tara vikal dekhi raghuraya, deen gyan hari leeni maya. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा. श्री राम जय जय राम. श्री राम जय जय राम. She came before Bhagwan and expressed her grief. Deen hai gyan hari leen hi maya. Bhagwan had to enlighten her. You see, Bhakta Jano, the whole subject matter of the Bhagavad Gita is to Bhagwan Krishna spoke to Arjuna how to deal with grief. How you should deal with grief. And grief comes in many forms, my friends. You lose a dear one. You lose your wealth. It's a lot of grief. You lose name and fame, there's a lot of grief. So grief comes in many forms. Losing a dear one is a different grief altogether, especially for the first time. Those who have lost your dear mother, or a sibling, or a dear friend, somebody very close to you. For the first time you have experienced that. That pain is tremendous. The first experience is always very difficult to deal with. Prabhu, what should I do? My husband was killed by you, and I'm standing before you now. Please tell me, what should I do? Bhagavan had to enlighten her. You see, when someone passes away, we have to know who. You see, our dharma is unique. There's only one dharma. Everyone else is religion. And it bothers me when people refer to other religion as dharma. That is not dharma. Religion. There's one dharma, Sanatana Dharma. And the two most important teachings of our dharma, Satya Sanatana Vaidya Dharma, is karma and reincarnation. No one has that. No other religion has that. It's interesting to note all the religions that originated in India took these two important teachings from the Vedas. Buddhism, karma and reincarnation. Sikhism, karma reincarnation. Jainism, karma reincarnation. They all took this from the Vedas and Upanishads. So what do we find? We also say it unknowingly sometimes. Someone passes away on social media, you want to express your grief, R.I.P. ऐसा क्यों लिखते हैं? Who is resting? कौन सो रहे हैं? This body made of chiti jalapav ka karne se earth, fire, air, water, heat and space. The moment the jiva is in this body has value. The moment that jiva leaves the body has no more value. That's why the last chapter of the Yajurveda says, where is found Ishavasya Upanishad, the 10th mantra says, Bhasmantangam shariram. When someone passes away, the body should be reduced, the physical body must be reduced to ashes through cremation. So who is resting anywhere? And still hum log likhte hai. Or you go and speak, rest in peace. Aisa mat boliye. Om Shanti. Bas. Don't say. Any Hindu who says, may the soul rest in peace, does not have a clue of his or her dharma. And something must be said with the force of the registers.
do not ever say, may the soul rest in peace. It goes against everything that the Shastra has to say about Atma. Atma Satya Jagata Mithya, Mahaupnishad says. There's only one Satya, and that's Atma. So when this glass is destroyed, what happened to that space that was in the glass? It merges with the infinite space. Likewise, our bodies are little containers, little glasses. When the Atma leaves the body, the goal is for this Jiva to become one with Paramatma. And please do not say salvation. English is such a limited word. English borrowed from all over the place. What does salvation mean? You're bad, you're a sinner, nothing is good about you. Someone has to salvage you. You have to believe in something to be salvaged. Tattvamasi, the Vedas said, you're Atma. You see how we've been saying this thing wrong for all the time? Don't say, may you attain moksha, may you attain oneness with Bhagavan. Moksha, everybody knows moksha. Why do you have to say salvation? Who's salvaging what? You don't have to salvage anything here. When someone dies, just like the container, the example, when the body is destroyed, based on karma, this jiva will take birth and come again. And please remember, in this dharma, Bhagavan does not punish you. I don't use the word God because God meaning someone ऊपर वाले है. आप लोग ऊपर वाले क्यों बोलते हैं? We have to change the way how we speak, प्यारे. Bhagavan, Ishvara, Ram. So there is no one sitting and passing judgment in the skies. If you don't this, you're cast in hell, be burning in hell. ये तो हमारे धर्म नहीं है. Those who are not allowed to think properly, ऐसा बोलते हैं. With our dharma, you ask question, प्यारे, question everything. Only by asking questions you can know. We can remove. So Bhagavan had to remove her doubt. Tina Jnana Hari Lini Maya. Bhagavan had to tell her about the nature of Atma. Atma's awareness shall never cease to be. We were present at the time of the avatar of Bhagavan Sri Ram, Bhagavan Krishna, probably in the form of worm insects. And we evolved by the grace of Bhagavan. And we are blessed with this human body. When is the time to seek moksha? When is the time to seek moksha? Don't say when I retire, Panditji. I hear that all the time. Now there is no better time to seek moksha right here, right now, at this moment. Because ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा. You will not be blessed with this human body. So when we understand what Atma is, when someone passes away, you can't grieve for the physical body. The body was lying before Taraji. Bhagavan said the body is lying before you. The body has no more value. Who are you grieving for when someone passes away? It is not like we're losing Atma. What are you losing? Based on karma, the individual will come again in another birth or will attain moksha. Now, there's a misconception. People say that when someone passes away, only when the person dies, then the person attains moksha. That is not the case. That's not what the Upanishads and Bhagavad Gita say. One has to become a Jivana Mukta while you're alive. Jivana Mukta. Because if you die as a wanting person with so many unfulfilled desires, you have to come again, pyare. You have to take birth to fulfill those desires. So the goal is to become one with Ishvara while you're alive. We heard sometimes, you go, I know some of the strangest thing you hear, you go to funeral and wake sometimes. हमारे पंडित लोग ऐसा बोलते हैं, soul rest in peace. Attain salvation. When I have an opportunity, I just say, Panditji, please don't do that. Shastra padho. Know what Atma is. In the history of human civilization, there is no concept about Atma. No one has a concept of Atma. For some cultures, animals don't have soul. आप जानते हैं. You study about religion. Animals do not have soul. That's why they're allowed to ill-treat them. They're allowed to, you know what to do. What else they do with it. So,
When we understand what Atma is, when someone passes away, we'll grieve intelligently, because how many husbands and wives you have had in the past? How many parents you had in the past? How wealthy you were in your previous lives? How many good karmas you've done in your previous life? Also, how many bad karmas we have done in our previous life? There is no memory. Bhagavan takes away that memory and sends you in this world so you can be all who you want to be in this life. Don't think about the past. You can't relive the past. So this is how Bhagavan had to remove Tara's ignorance. So that's why when someone passes away, we we sing bhajan, we read 1-2 verses from Bhagavad Gita, these interesting episodes, these beautiful pasang about death and what Atma is, so that we can help to lift that person who is grieving. And we heard sometimes, Pandit ji, if I don't cry, what log kya kahenge? Main nahi roongi, log kya kahenge? We heard sometimes, what do people say if I don't cry? Are are we living to please people? Yeah. You have to know who or what you're grieving for. Because there's a beautiful story my Nana used to say in Rishikesh. He came from Rishikesh 200 years ago. He said there was an announcement that Sankeshwar died. Sankeshwar कौन मैं नहीं जानता हूँ. सब लोग रोते हैं. Sankeshwar मर गया. Sankeshwar मर गया. Every whole news is going on. Sankeshwar. Everybody's crying. Sankeshwar died. Then one gentleman said, Sankeshwar कौन है? Sankeshwar was the donkey that died in the village. Sab log rote hai. That's how we believe sometimes. That's how we behave sometimes. Sankeshwar mar gaya. Nobody want to question. We follow the crowd. No. Ask questions. Pyare. Only then you remove your doubts. Chitti jala pao gagana samira. This will go one day. It doesn't matter how much you try. You cannot preserve it. It doesn't matter how pretty and handsome you are. You're much pretty and much more handsome in your previous lives than this one here. You age, we age. Cells die every day. Thousands of cells die every day, and thousands of cells come in the body again, and we continue to live. One of these days, the body will die totally. Prane swa, panay swa, vyane swa, udane swa, brahmane swa, brahmatma, jab brok charate, aisa bolte hai na? Because the body has the 5 pranas. When we die, it takes time for these pranas to exit the body. Even if the doctor pronounces the person, that is individual, mar gaya, he's dead or she's dead. It takes time for these pranas to exit the body. Then, according to our dharma, within 24 hours, we perform cremation. Those who believe in the resurrection of the physical body, dafan karte hai. They perform burial. And the beauty about this, our dharma, is that we don't criticize too much. Is that true? On the other hand, people have so many things to say about this, about that, so many things they're critical of us. So Hindus do not perform burial. Those who believe in the resurrection of their body, they will perform it. They'll do burial. But for us, at the time of death, this has no more value. Chidananda Rupaha Shivoham Shivoham. You're nothing else but pure awareness. You're not your emotions. So we have to, like, when you peel an onion, you have to really go and you have to remove all of this misconception. Am I my emotions? Am I my few moments of happiness? And the rest of my life, I go through pain and suffering, I'm miserable. Am I all this wealth that I have? Am I this popular person? All these things we have to ask a question and we have to negate. You have to negate. And what remains at the end? Awareness remains. That's why Prabhu Shri Ram had to enlighten Taraji. So please remember this that we talked about. Never ever say, may this soul rest in peace. Don't use the word salvation for moksha. When people talk about karma, let them know. Everybody knows about karma. Okay, very quickly before we conclude. We're talking about karma. Karma has 3 parts. Sanchita papa vinashana lingam tat pranamami sada shiva lingam. We all have sanchita karma. Whether you believe in karma or not, pyare, you have karma. This huge spiritual account from billions of lives. So start with sanchita karma. One life is a withdrawal from that account, prarabdha karma. Isme sukha dukkhe samekritva, Bhagavad Gita chapter 2 verse 24. Sukha dukkha samekritva, labha labha jaya jaya. Happiness, sadness, gain, loss, victory, defeat will be there for every person.
So you have done these actions, we have done these actions, so we are withdrawing from that spiritual account. When things are okay, hum khush hai. The moment things do not go our way, we blame everyone else. Is that true? How many times have you blamed other people for your failures and so bad? Are bhai, your karma, based on your karma, you get your spouse in this life. There's no guessing game. You may say, Panditji, I went and I saw him, I saw her, the mall, and fell heels over, I fell in love. No, your karma brought you together. Over 7.5 billion persons, you could have gotten married to anyone else. But no, your karma's brought you together. That's why when Vaidik Vivaha is done the proper way, that you find these marriages last. Ajkal, Panditji, we have 45 minutes for this. I can't do it in 45 minutes. Go get someone who you can do it. Because the path will come in my head. Right? So, based on karma, you're who you are today because of your karma. Don't blame anyone. Your karmas, your parents' karma have a connection. Your brothers, your sister, these karmas have a connection. Your spouse's karma, your children's karma, they all have a connection. You didn't drop from the sky just like that. You're here because of your reason. Because of karmas in the past. If you ask any person, any other religion, why you're here, they can't answer why you're here. They can't tell you why two people born the same day, two children born the same day, one has everything good for one child and the other one has nothing good. They're ready to give the child for adoption at the time of birth. Bhagavan created that situation. Let me not say Bhagavan, God. They say God created that situation. No, why one person has to get the short end of the stick and the other one the long end? Why one has a golden spoon and the other one has nothing? Bhagavan doesn't point. Bhagavan karma paladata. Bhagavan gives us the fruit of our actions. So understand this, my friend. This is the beauty of Vedic Dharma. When you understand this, nobody can stamp you on your forehead or convert you. Nobody can brainwash you. Because when they bring the scripture, you say, okay, read one verse from the scripture, I'll bring my Bhagavad Gita. What will they do? They won't bug you again. But what we do, we listen to what they have to say. And they brainwash and tell us all things. Because we do not know our scripture. You give them one answer, then they don't want to see you anymore. Oh, he knows what he's talking. Let's not go to that home. Let's go to the other home. Prarabdha karma is a one withdrawal. From the Sanchita karma. And the third part of karma is Agami karma. What we do now will bear fruits in the future, probably in this life or other lives. This is the beauty of karma, my friends. So you're who you are because of your karma. Your rag and dvesh, your likes and dislikes are determined based on Purva Janma Samskar. If you ask anyone that, no, God made me this way. Are bhai? We put God in the mix. When things do not go our way, we even blame Bhagavan. Bhagavan do not go our way, we even blame Bhagavan. Bhagavan ऐसा क्यों करते हैं? Bhagavan हनुमान जी ऐसा क्यों करते हैं? We blame everybody, प्यारे. Create your destiny through karma. Face the consequences now. Then we'll purify the mind. We'll get, and only through pain and suffering we can really learn in this life, my friends. Only through difficult moments you can learn. We can learn. बस time हो गया. बोलिए रामचंद्र भगवान की जय. पवन सुत हनुमान की जय. 1 minute we'll sing for one chant for Hanuman ji and we'll meditate for 30 seconds. अब फिर आरती होगी. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. 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 Bolo Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. 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 Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram.
Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. So we'll meditate for 30 seconds only. This is what we do every Tuesday. So just sit in a comfortable position, please. The whole Vatavaran is filled Ramamay, Ram Ram. Dhyan se suniye. Since 7 p.m. we've been chanting Vedic mantras. Puja to Bhagavan, Abhishekam to Hanumanji. Look how handsome he looks with his beautiful pan mala, his beautiful saram, his beautiful vastra. So the whole atmosphere is filled with the presence of Hanumanji and Sri Ram. We want to tap into that energy. So please sit in a comfortable position. Just a friendly reminder, if you didn't put your phone on silent, please do it at this time so that there won't be any disturbance during the meditation. So if you didn't put your phone on silent, please put it at this time. Then we do one pranayam, and then we'll meditate for about 30 seconds. Take Bhagavan's name as you do pranayam. After pranayam, feel Bhagavan's presence in every cell of your body. Just like how Hanumanji ripped his chest apart and showed the world that Sri Ram lives in him, Bhagavan resides in you as well. So meditate upon that Atma who is no other than Bhagavan Sri Ram, that's within you. If your mind goes astray, just open your eyes, glance upon the beautiful Murti of Bhagavan. Take that beautiful Murti, close your eyes again, try your best to meditate. Only by meditating we can be able to acquire Antahakarana Shuddhi. We can purify the mind. We can have control over our negative impulses. This is the power of meditation, my friends. So quietly, all of us will meditate for a few moments. Om Bhurbhuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Asto Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Om Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramayah Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukha Bhag Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय. After Aarti, there is some Priti Bhoj. We have a group of bhaktas came from Scarborough. आज की पूजा लंबी है ना, हर मंगल ऐसे ही होती है. You know, whenever we come for satsang and puja, you must leave with some message from the Shastra. We must leave it a bit of it, because हम लोग हमेशा busy है. दर्शन के लिए 2 मिनट अंदर आते हैं, and as a result of not sitting for satsang, even the adults do not know about our dharma. बच्चे को कैसे सिखाएंगे? How will you teach your children if your adults do not know? Because we are so busy.
We come for 2 minutes in mandir and we run out back again. In and out like that. We don't sit and listen a little bit. That's why we're losing. For the last 2 generations, I'm sad to know that parents do not know much about their dharma. And the sad thing is they do not encourage their children to read Bhagavad Gita. That's why our Hindu brothers and sisters are being brainwashed and being converted. We have to stop that. We have to stop that. So we have to make sure while our children go to school, acquire secular education, encourage them to read Bhagavad Gita. Encourage them to read Shastra. That's the only way they will be proud Hindus. You can't say you're a proud Hindu and you don't have a clue about karma. You can't say you're a proud Hindu and write, "May the soul rest in peace." How can you be proud Hindu and make such a statement? I take this responsibility very serious. I want the best for my Hindu brothers and sisters. Sometimes the teacher has to be stern, or else the children don't pay attention in class. So we have to put the message in such a way so that it registers in our mind. Every moment you have, read Bhagavad. Never say that you're too old to read Bhagavad Gita, you're too busy to read Bhagavad Gita. हमारे पास phone है. How many hours you spend on social media? मत बताइए. Take half hour from that time you spend on social media, 1 hour of Bhagavad Gita. Dharma kshetre kurukshetre samaveta mamaka pandavaschaiva kim akurvat sanjaya. You know it. Then at the end of it, you know 700 verses. The last verse, yatra yogeshwara krishno yatra partho dhanurdhara tatra shri vijayo bhuti dhruva nitirmatir mama. If we don't, sad thing, look at our friends from other cultures. They instill on their children to study their scripture from a tender age. हम लोग ऐसा नहीं करते हैं. Our children do not want to go to mandir. Who do we blame? I'll say it as they blame the parents. When they were small, you didn't take them. करवा सच है. बोलना पड़ेगा. It's a hard truth. It's bitter truth, rather. But we have to say it as it is. Take them when they're small. Don't wait until they're teenagers and have a mind of their own. When they go to mandir, यहाँ पे phone बात करना, children come, no phone. They will say, Panditji is very serious. I wear that as a badge on my hand when it comes to discipline. Because हम लोग प्रार्थना के लिए आते हैं. Sometimes you go to satsang and mandir, all the children, the adults are on the phone, Panditji पूजा करते हैं. यहाँ नहीं होता. Sorry to say. We have to put a limit to it. So Friday is Tulsi Vivaha and Sunday is Purnima. Puja starts at 6:30 for Tulsi Vivaha on Friday the 24th. And also the 26th is Kartika Purnima. We do Kartik Stan. हमारे यहाँ गयाना में हम लोग Kartik Stan करते हैं. Atlantic Ocean, but Atlantic Ocean there is some Ganga Jal in there as well. ये तो हमारी श्रद्धा है. Every Hindu on Kartik Purnima will go. All is salt water in the Atlantic Ocean. हम लोग गंगा देवी का गंगे च मने च गोदावरी सरस्वती. All of these beautiful mantras we chant, we invoke the presence of Ganga. Everyone goes and we do Ganga Puja on the banks of the Atlantic Ocean. हम लोग लेकिन तेरे में स्नान नहीं कर सकते ना. It will be too cold for us. But you can do Avahan in your home. We do Ganga Arati and दूत कृपा सिंधु मत्कार्यं साधय प्रभु. श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत रामचंद्राय नमः. आरती की जय हनुमान लला की. आरती की जय हनुमान लला की. दुष्ट दलन रघुनाथ कला की. आरती की जय हनुमान लला की. आरती की जय हनुमान लला की. जाके बल से गिरिवर कापे. रोग दोष जाके निकट न झापे. अंजनी पुत्र महाबलदाई. संतन के प्रभु सदा सहाय. आरती की जय हनुमान लला की. आरती की जय हनुमान लला की. देवीरा रघुनाथ पठार.
लंका जारी सिय सुदिलाए। लंका सकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बारण लाई। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सहारे, आनि संजीवन प्राण उबारे। बैठी पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाए भुजा असुर दल मारे, दहने भुजा संत जलधार। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बस वैकुंठ परम पद पावे। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। गति बजाओ। सीताराम हनुमान, सीता बजाओ बजाओ। हनुमान सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। रखिए आरती रखिए प्लीज। सबको हाथ जोड़िए। बच्चे, take your hand out of your pocket and close your hands like that, please. सबको ऐसा हाथ जोड़िए। हंसो मत, आंखें बंद करो। Close your eyes बेटा, close your eyes. Pray. ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव
मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देव शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय कृष्णचंद्र भगवान की जय जगदम्बे मैया की जय। हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव सत्य सनातन धर्म की जय। आरती पंचामृत प्रसाद।